एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम रिच एंड वेल्दी इन योर लाइफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए आपको अपनी लाइफ में क्या सीखना चाहिए। हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप अपनी लाइफ में अगर लेजीनेस से सफर कर रहे हैं, लेजीनेस इज अ बिग इशू, बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ, और उससे आप अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से, तो आप इस सिचुएशन को टैकल कैसे करें। और हम बात करेंगे कि अगर आज अपनी लाइफ में आपने लाइफ को बहुत सीरियस लेके रखा हुआ है, उस लाइफ को आप एक टेक इट इजी एटीट्यूड कैसे डेवलप करें सो दैट यू कैन रियली लिव योर लाइफ टू द बेस्ट पॉसिबल वे। ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस एपिसोड 11th एपिसोड ऑफ रिलेंटलेस टॉक विद रवि में करेंगे। आपको पता है वो क्या करना है। इफ यू वांट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, आपको सिर्फ इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं 11th एपिसोड ऑफ रिलेंटलेस टॉक विद रवनीत। हर एक एपिसोड की तरह, हर एक अध्याय की तरह, इस अध्याय में भी, इस एपिसोड में भी हम 3 सवालों का जवाब देंगे। सो लेट्स स्टार्ट वेरी वेरी क्विकली विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर टुडे। So this question is from Prashant through WhatsApp. He's from Nashik. He's asking, I've heard you say in your free webinars that wealthy people invest their money in a different way from most people. Can you speak a bit about what kind of instruments I should invest my money in? बिल्कुल। सो प्रशांत, आपने सही सुना है। मेरे फ्री वेबिनार्स आपने जो अटेंड करे, यस, रिच और वेल्दी लोग और फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग हैव अ डिफरेंट मनी मैनेजमेंट सिस्टम। उनका पैसे को मैनेज करने का तरीका अलग होता है। अगर आप देखोगे, बहुत लोग, अगर आज की जनरेशन देखो, माता पिता की जनरेशन छोड़ दो, आज की जनरेशन अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करती है। एंड हमें अपने आप से पूछना चाहिए, अगर हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, इज इट रियली गोइंग टू हेल्प मी टू बिकम रिच एंड वेल्दी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सी, एक घर लेना 1 करोड़ का बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई सिटी में, या एक गाड़ी लेना 15-20 लाख की, इफ यू कैन वर्क डिसेंटली इन योर करियर, इन योर बिजनेस, 1 करोड़ का घर लेना बाय गोइंग फॉर अ मॉर्गेज लोन ऑफ 20 साल का, एंड एक 15-20 लाख की गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दैट डज नॉट मेक यू रिच। यू आर ऑलवेज गोइंग टू be in a middle class population, which is okay if you're okay with it. But if you really want to become rich and wealthy, हमें देखना पड़ेगा कि हम किन इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना पड़ेगा जहां पे रिच लोग, वेल्दी लोग, फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इन म्यूचुअल फंड्स। लोग म्यूचुअल फंड से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं SIP में, लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं यूलिप प्लान्स में, लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंडोमेंट प्लान में, लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं PF में, PPF में, SIP, यूलिप, टर्म प्लान। These are the kind of stuff, mutual funds, these are the kind of stuff, these are the kind of asset classes जहाँ पे बहुत लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि are these really the asset classes, are these really the instruments जहाँ पे रिच लोग, वेल्दी लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? और आंसर होगा बिल्कुल नहीं। So what are those instruments that you need to learn for you to actually become rich and wealthy in your life? Rich, wealthy people, financially literate people, financially successful people invest their money in instruments like they invest their money first of all in building businesses. They become rich and wealthy by building businesses, by becoming an entrepreneur. They become rich and wealthy by learning how to invest in equities, equity market, which is stock market. They become rich and wealthy by learning how to invest their money in real estate. और जब मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट कि आपने घर लेके रख लिया एंड देन यू आर थिंकिंग कि ये कैपिटल गेन तो होगा अगले 10 साल में, एंड दैट इज हाउ दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। दैट इज पैसिव इन्वेस्टिंग। रियल एस्टेट मीन्स हाउ डू यू फाइंड आउट, हाउ डू यू मेक योर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट where you're finding out cash positive properties which is going to give you money from day one. So this is something that needs to be learned. This is something that you need to learn. You need to get coached by somebody who can give you that coaching. So you need to learn how to invest your money in real estate. You need to learn how to invest your money in building businesses. You need to learn how to invest your money in equities. You need to learn how to invest money in, let's say, blockchain technology, cryptocurrencies. You need to learn how to invest money in hedge funds. You need to learn how to invest money as an investor. Most people have become consumer in their life. That's the reason most of the population of this world remains middle class or lower middle class.
if we want to become rich and wealthy, we need to learn these asset classes. Becoming an angel investor. अगर आप किसी भी rich, किसी भी wealthy इंसान को देखोगे, they become rich and wealthy by building businesses. They become rich and wealthy by investing in equities. They become rich and wealthy by learning how to invest in real estate. They have become rich and wealthy by learning how to invest in hedge funds. Today people are becoming rich and wealthy, not today, since last couple of years, by learning how to invest in cryptocurrencies. So a lot of these instruments are there which people need to learn for them to actually become rich and wealthy. So this is what my answer to your question will be. I hope this helps. So let's move to the second question that we have for today. This question is from Gurpreet, Jalandhar through WhatsApp. He's asking that it's been years that I'm not at all doing anything which will help me reach my potential in life. Mainly because I'm a lazy person. I really wish to change that. How do I become a move away from my laziness and become a person who can reach her full potential in life? Okay, so Gurpreet, Jalandhar से. Jalandhar actually मेरा नान का भी है. So my mom native place is Jalandhar. So Gurpreet, you're saying कि I want to reach my full potential in life, but from years and years, मेरी एक प्रॉब्लम है which is my laziness, which is not helping me. ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने सुना होगा कहीं ना कहीं मैंने इस क्वेश्चन का पहले भी शायद किसी फॉर्म में आंसर दिया होगा. लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन किसी एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है. इस पूरी दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल सफर विद लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन. और सबसे पहली चीज जो आप बोल रहे हो कि दैट आई एम अ लेजी पर्सन एंड आई विल प्रूव इट टू यू व्हाई यू आर नॉट अ लेजी पर्सन. बट बिफोर आई इवन आंसर दैट हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, यू आर सेइंग आई वांट टू रीच माय फुल पोटेंशियल इन लाइफ. हर कोई बोलता है यू शुड नो और यू शुड अचीव योर फुल पोटेंशियल इन लाइफ. यहां पे मैं ये बोलना चाहता हूं, नो ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट. You can be anybody. You can be the most enlightened person on this planet who is a spiritual person. Nobody is ever going to reach their full potential in life. Why? The reason no human being can ever reach their full potential in life because there is no limit to a human potential. There's no limit to human potential. So no matter what you achieve, no matter what you get, no matter how far you go, there's always going to be the next path, the next destination that is going to await you. So that is the first part of your question that I wanted to answer. Now let's come to the main question, which is laziness hai. I'm a lazy person. How do I overcome laziness? First thing, you're not a lazy person. Now you will say, Ravneet, why are you saying that? I know for the fact that I'm a lazy person. मैं हर चीज को procrastinate करता हूँ. हर चीज में I just laze around. I don't get things done. No, you're not a lazy person. Let me prove it to you. Is there any one thing in life, at least one thing in your life, where you do not laze around at all, where you're not lazy at all? You do that thing immediately. Is there any one thing in your life? Can you think of one thing? I'm sure if you put your mind to it, you're going to think of many things where you're not procrastinating at all. For example, let's say if you today are binge watching shows on Netflix, Hotstar, Amazon Prime. You're watching episode after episode, season after season of your favorite web series. Is there any laziness in that? There is no laziness. Now you will counter question me, Ravneet. This is unproductive. Problem तो यही है ना कि मेरा laziness जो होती है वो इन सब चीजों में नहीं होती क्योंकि unproductive है. Point is not about being productive or unproductive. There is something in your life that I'm sure you can figure out where you're not lazing around. So you are not a lazy person. जब तक आप ये चीज अपने दिमाग से हटाओगे नहीं. See, if you tell yourself I'm a lazy person, that's your identity. And people behave in their life, which means people actions in their life are always in synonymous with their identity. So if you tell yourself I am this kind of a person, your actions will always be that kind of a person because consciously or subconsciously you're always going to act as per what you believe you are. So what you believe you are today, that you are a lazy person, is a wrong identity to have. And I've proved to you right now that you're just not a lazy person because I'm sure there's something in your life where you're not lazing around. Now how to overcome laziness? See, this procrastination comes because of various factors. Laziness comes because of various factors. Essentially, all the factors are related to your mind. आपका माइंड आपको बोलता है कल कर लेंगे, आपका माइंड आपको बोलता है आज नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, आपका माइंड ओवरथिंक करता है, आपका माइंड ओवरवेल्म होता है. ये सब चीजें जो होती है वो माइंड के थ्रू होती है. तो कोई टिप नहीं है टू बी एबल टू फिगर आउट हाउ टू ओवरकम लेजीनेस. टिप तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, बहुत सारे बुक्स में मिलेगी. 5 tips to overcome laziness. And I'll tell you right now that no matter what tips that you figure out on YouTube, on a lot of books, nothing is going to help you unless you're figuring out a way to know how to run your mind. Unless you're figuring out a way
how to be able to direct your thoughts, direct your mind in a way which is not going to make you procrastinate, which is not going to make you overthink, which is actually going to make you get things done. So there is no short answer to overcome laziness. I will be very truthful to you. The long answer and the right answer is that you need to learn how to dominate your mindset, how to manage your mindset, which is exactly what is going to solve the problem from the root cause. प्रॉब्लम को कभी सिम्टम से ट्रीट नहीं करना चाहिए, हमेशा रूट कॉज से ट्रीट करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू. सो लर्न हाउ टू डोमिनेट योर माइंडसेट, एंड यू आर नॉट अ लेजी पर्सन, यू गॉट टू मूव अवे फ्रॉम दैट आइडेंटिटी. सो आई होप दिस हेल्प्स. लेट्स मूव टू द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर टुडे. So this question is from Salim from Hyderabad through Facebook. He's asking that how to build take it easy attitude towards every aspect of life and still being in productive mode. Unintentionally, the habit has been built to take life seriously since a long time. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. हाउ टू बिल्ड टेक इट इजी एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. ये बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं, ये सोचते हैं और इस तरीके से लाइफ जीते हैं कि लाइफ इज वेरी वेरी सीरियस. They take their careers very seriously. They take their business very seriously. They will take shooting a video like this very very seriously because people are going to watch. The world is going to watch. They should like me. They should adore me. They will take everything very seriously. मैं भी अपनी लाइफ में हर चीज सीरियसली ही लेता था. मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. And your question today is coming from a maturity perspective. Maybe you have heard me saying, or maybe you have learned somewhere, or maybe from internal voice within, you are realizing that life should not be taken too seriously, and you are absolutely right. And I will also tell you how you should implement this philosophy of not taking your life seriously. See, पहली बात, हम लाइफ को सीरियसली क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी पता होना चाहिए for the viewers, for the audience who are thinking, Ravneet, what are you talking about? Obviously, I should take my career seriously. Obviously, I should take my marriage seriously. I should take my business seriously. I should take raising my child as a father, as a mother very very seriously. I should take my whatever that you're doing very very seriously. I should take my education very seriously. नहीं लूंगा तो मैं कुछ करूंगा नहीं. मुझे एक बात बताओ. Let's take an example. Let's take an analogy. You want to fly in your life, right? You want to achieve in your life. You want to become successful in your life. If you want to fly in your life, which is nothing but becoming successful, if you want to fly in your life, how are you going to fly in a very smooth way? किसी भी चीज को फ्लाई करने के लिए लाइफ में स्मूथ वे में फ्लाई करने के लिए they need to be very very light, not heavy. They need to be light, not heavy. When you take life seriously, you become very heavy in your head. And when you're heavy, you will not be able to do things in a way that you should. You will not be able to get things done in a way that you should. You will not be able to build an attitude towards life which is going to help you to be able to try to reach to the potential that any human being can reach in their life, and that potential is always going to be limitless. You need to be always light in your life, not heavy in your mind for you to be able to do things that you want to. And why to take your life seriously? Let me answer this. Today, our human life is a temporary life, just like any other creature. We are going to die one day. Now, when I say that our human life is temporary and we are going to die one day, so take your life easy, don't take your life seriously. Some of the people will think, Ravneet, I know that I'm going to die one day, but that doesn't mean I should not take my life seriously. आप अपने आप से पूछो, कितना लाइफ seriously लेके आपने झंडे उखाड़ लिए? लाइफ को कभी सीरियस लेके झंडे नहीं उखाड़े जाते. लाइफ को हमेशा इजी एटीट्यूड लेके ही झंडे उखाड़े जाते हैं. आप किसी को भी देख लो, किसी बिजनेसमैन को, किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी स्पिरिचुअल बीइंग को, किसी स्पोर्ट्समैन को, if they really realize how they've achieved success, they would say that they've achieved success because they have not taken their life seriously. For example, one person is coming into my mind, MS Dhoni. Because he does not take cricket seriously, he does not take anything seriously, is the reason he could achieve the kind of success that he has achieved. Now there will be other people on the other hand who will say, no, I have achieved my success by taking my life seriously. But I believe that you can only achieve the kind of success that every human being can achieve by taking their life seriously, by taking their life lightly, by taking their life easy, because that is the best possible way. And I will tell you why that is the best possible way. क्योंकि एक दिन हम सबने मर जाना है और हम अपने आप को बहुत बड़े तोपची समझ के बैठे ह्यूमन बीइंग. अगर हमें अपनी औकात पता लगनी चाहिए ना, तो ये हमारी औकात है. Today, you are one person, Salim, among 7.8 billion people on this planet. 780 करोड़ में आप सिर्फ एक बंदे हो.
मैं एक बंदा हूं, ये 780 करोड़ लोग एक छोटे से अर्थ पे रह रहे हैं। छोटा सा प्लेनेट है हमारा अर्थ, उसमें रह रहे हैं। ये छोटा सा प्लेनेट जो अर्थ है, ये छोटे से सोलर सिस्टम का, छोटे से नन्हे से सोलर सिस्टम का पार्ट है। ये जो नन्हा सा सोलर सिस्टम है, इस पार्ट ऑफ दैट नन्हा सा गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। That Milky Way galaxy is part of that small universe, and that small universe is part of that multiple universes which is part of that entire cosmos. ये कॉस्मोस कहाँ खत्म होती है और कहाँ स्टार्ट होती है किसी को नहीं पता। इस एग्जिस्टेंस में इतने सारे यूनिवर्सेस में, इतने सारे सोलर सिस्टम में, एक सोलर सिस्टम में, एक अर्थ पे, उन 780 करोड़ में हम एक बंदे हैं और हमने अपनी लाइफ को सीरियस लेके रखा हुआ है, अपने करियर को सीरियस लेके रखा हुआ, अपने बिजनेस को, अपनी लेगेसी। आई वांट टू लीव अ लेगेसी, पीपल शुड नो मी। जब आप लाइट रहते हो ना अपनी लाइफ में, when you are not going to think I want to become the number 1 mental toughness coach, I want to do this, आप कर भी लोगे तो क्या? अगर लेगेसी छोड़ भी लोगे तो क्या? कौन सी लेगेसी? इस अर्थ पे लोग याद रखेंगे आपको सालों साल, जैसे आप भगत सिंह को याद रखते हैं, नेल्सन मंडेला, मार्टिन। अगर याद रखते भी तो क्या? People say a lot of speakers, a lot of coaches, with all due respect to everybody, because everybody have their own thinking, a lot of successful people out there say I want to leave legacy, I want to leave legacy. अरे कौन सी लेगेसी? अगर छोड़ भी दिया लेगेसी, कब तक याद रखेंगे और कितना याद रखेंगे एक छोटे से अर्थ पे? मैं बोलता हूँ अगले 50 करोड़ साल तक अगर अर्थ है और तब तक भी लोग याद रख रहे हैं, आगे की जनरेशन है, तो क्या हमारी औकात क्या? ये अर्थ कल निकल भी जाएगा ना, ये प्लैनेट कल उड़ भी जाएगा, घंटा पता नहीं लगेगा पूरे कॉस्मोस में। ये सोलर सिस्टम उड़ जाएगा, घंटा पता नहीं लगेगा इस कॉस्मोस में। और हमने अपने आप को इतना सीरियसली लेकर रखा हुआ है। जब हम अपने आप को सीरियसली नहीं लेते ना, when we take our life and when we realize it, when we have this humbleness, so आपको जो क्वेश्चन है, how to build this take it easy attitude, for you to build this take it easy attitude, you need to realize हमारी औकात कितनी है। हम तुच्छ मात्र है इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। जब आपको अपनी पता लगेगी ना औकात, हम सबको ह्यूमन बीइंग्स को अपनी औकात पता लगेगी कि हम तुच्छ मात्र है इन द ओवरऑल कॉस्मोस, तब हम हम्बल बनेंगे। जब हम हम्बल बनेंगे, हम लाइट बनेंगे। जब हम लाइट बनेंगे ना, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग सीरियसली इन अ लाइफ, एंड व्हेन वी डोंट टेक थिंग्स सीरियसली इन अ लाइफ, दैट्स व्हेन वी गेट थिंग्स डन मोर. That's when we fasten our pace to achieve any kind of success that we want to achieve, whether in business, whether in career, whether in money, whether in health, whether in relationship, whether you want to bring a revolution, you want to get India independent like Shahid Bhagat Singh. When you don't take life seriously, that's when things happen. So I hope my answer is going to help you to understand how you can take your life in an easy way and still being in a productive mode, because productive mode तब बन जाता है भयंकर, तब बन जाता है amazing when you take yourself very very light, when you take your life very very easy. I don't take myself very seriously. I don't take my coaching very seriously. I don't take my life seriously. I don't take anything, my wife seriously, my mom seriously, my family seriously. I don't take anything seriously. Is the reason I could be very light and I could get things done. इसके लिए थोड़ी सी maturity चाहिए लाने में। मेरे पास भी थोड़ी देर बाद आई है, पर धीरे धीरे अगर आप समझोगे तो ये बात समझ आ जाएगी कि हमारी औकात सिर्फ तुच्छ मात्र की है एज अ ह्यूमन बीइंग. So I hope this helps. With this we have come to the end of this long episode of Relentless Talk with Ravneet. I hope मेरे answers आपके questions को आंसर कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और I hope it is helping you in your life. With this I'm going to take your leave, and I'm going to come in the next episode of Relentless Talk with Ravneet next week. In the meanwhile, if you have a question as well, please ask me a question on all of my social media channels, Facebook, Twitter, Instagram, or even on WhatsApp office number, which is going to be displayed on the screen. And I'm going to see you next week.